Today we are going to start question number 2 of exercise 9.2, chapter areas of parallelograms and triangles. In question number 2, we are given a parallelogram ABCD with E, F, G and H, the midpoints of AB, BC, CD and DA. E, F, G, H, these are the midpoints of these sides. We will join all the sides, and when we join all the sides, we get again a quadrilateral A, B, C, D. E, F, G, H. Now E, F, G, H is again a quadrilateral. According to question, A, B, C, D is a parallelogram and E, F, G, H is a quadrilateral. We have to prove area of E, F, G, H equals to half of area ABCD. ये हमें प्रूव करना है कि ABCD का एरिया AFGH का एरिया ABCD के एरिया का हाफ है. हम ये रिजल्ट प्रूव करेंगे. बट अगर इसी क्वेश्चन में ये मेंशन हो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH is half of area of parallelogram ABCD, then firstly we need to prove that EFGH is a पैरेललोग्राम. तो आगे भी जो एक्सरसाइज हमें सॉल्व करनी है उस एक्सरसाइज में ये स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव कैसे करना है. दैट्स व्हाई फर्स्टली वी विल try to learn how to prove that EFGH is a parallelogram. In one of the previous videos we learned midpoint theorem of a triangle. मैं प्रूफ लिखूंगा. फर्स्टली how to prove EFGH is a parallelogram. फर्स्टली मैं एक कंस्ट्रक्शन लूंगा यहाँ पे. Join AC. I can say join A to C. मैंने लिखा join AC. जब मैंने AC को join कर दिया, AC is a diagonal. Now ABC, this one ABC, this one is a triangle. यहाँ लिखूंगा. A, B, C. This one is a triangle. E is the midpoint. F is the midpoint. According to midpoint theorem, line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and is half of it. That is, E and F are the midpoints. So line segment joining these two midpoints is parallel to third side. Third side means AC. We can say EF is parallel to AC and EF is half of AC. EF is parallel to AC and EF is half of AC. According to midpoint theorem, मैं यही concept यहाँ पे use करूँगा in triangle ABC. EF is parallel to AC. EF half of AC. This is according to midpoint theorem. ब्रैकेट में मेंशन करते हैं. EF is parallel to AC, EF is half of AC according to midpoint theorem. या फिर अगर किसी को इसको ठीक से explain करना है, then we can explain also. Basically ये first question है midpoint theorem पे based, so we will explain it also. मैं लिखूंगा since E and F are the midpoints of AB and BC respectively.
E and F are the midpoints of AB and BC respectively. Therefore, by midpoint theorem से EF is parallel to AC and EF is half of AC. EF parallel to AC, EF half of AC according to midpoint theorem. अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूंगा, ट्राइंगल ADC, इस ट्राइंगल में भी H is the midpoint, G is the midpoint. So according to midpoint theorem, HG parallel to AC, HG half of AC. मैं लिखूंगा similarly in triangle ADC by midpoint theorem, HG parallel to AC and HG equals to half of AC. एक बार हमें इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लेना है. ये जो दो रिजल्ट्स मैं लिख रहा हूँ, EF is parallel to AC, HG is parallel to AC. EF is parallel to AC, HG is parallel to AC. सिंपल टर्म्स में मैं ये बोलूँ कि EF और HG both are parallel to AC. It means EF is parallel to HG. I can say EF is parallel to HG. It means ये दोनों भी parallel हैं. If two lines are parallel to the same line, these two lines are parallel to the same line. It means these two lines will be parallel to each other. वही concept हमने use किया. EF is parallel to HG. Secondly, EF half of AC, HG half of AC. दोनों की right hand sides equal हैं, so we can say EF equals to HG. And यहाँ से एक और रिजल्ट आ रहा है. EF और HG, these two are parallel. EF, HG, these two are equal. If in a quadrilateral one pair of opposite sides is equal and parallel, then the quadrilateral is a parallelogram. अगर quadrilateral की बात करें EFGH में one pair of opposite sides, these two are parallel, these two are equal. So this one is a, therefore EFGH is a parallelogram. एक रिजल्ट प्रूफ हुआ कि दिस वन इज अ पैरेललोग्राम. अगर हमें कभी ये प्रूव करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFGH इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD, तो ये रिजल्ट हमने यहाँ पे ड्राइव कर दिया कि EFGH इज अ पैरेललोग्राम. अब प्रूव करेंगे कि EFGH का एरिया हाफ ऑफ BC है. उसके लिए मैंने HF को भी ज्वाइन किया एंड HF. Now if I talk about this triangle GHF, this one is a triangle. We know AD is parallel to BC. These are opposite sides of parallelogram. Since AD is parallel to BC, यहाँ से रिजल्ट ये होगा, if AD is parallel to BC and AD equals to BC, these are opposite sides of a parallelogram. These two sides are equal and parallel. If AD is parallel to BC, यहाँ से एक रिजल्ट और ड्राइव होगा. AD का पार्ट DH will be parallel to CF. DH parallel to CF. And यहाँ मैं लिखूंगा if AD equals to BC, then half of AD will be equal to half of BC. अगर AD और BC इक्वल है तो इनके हाफ भी इक्वल होंगे. DH parallel to CF and half of AD. AD का हाफ DH लिखूंगा because H is midpoint, so ये पूरा उसका हाफ DH लिख रहा हूँ. Likewise BC का हाफ मैं लिख रहा हूँ this one CF. Again DH is parallel to CF, DH is equals to CF. It means this quadrilateral DHFC, in this quadrilateral one pair of opposite sides is equal and parallel. So this one is again a parallelogram. I can say DHC
DHCF is a parallelogram. DHCF is a parallelogram. एक बड़ा अच्छा सा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे. इसको मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ तक. इसको if this one is a parallelogram, हमने अभी प्रूफ किया this one is a parallelogram, this one is a triangle, parallelogram is DHFC and triangle is GHF. These two are on the same base HF and between the same parallels. हमने एक थ्योरम की थी एक वीडियो में डिस्कस. If a parallelogram and a triangle are on the same base and between the same parallels, then area of triangle is half of the area of parallelogram. मैं लिखूंगा since triangle GHF and parallelogram is DHFC are on the same base. Base is HF and between the same parallels. Parallels are DC and HF. Therefore, area of triangle is GHF equals to half of the area of parallelogram. Parallelogram is DHFC. इसको मैं लिखूंगा इक्वेशन नंबर 1. अगर मैं इस पोर्शन में पहुंचूंगा, लाइकवाइज इस पोर्शन में मैं प्रूव कर सकता हूं HABF parallelogram. This one is a parallelogram, this one is a triangle. Same step से we can prove area of triangle is half of area of parallelogram. मैं similarly लिखूंगा. Similarly, area of EHF equals to half of area of parallelogram HABF. This one is equation number 2. यहाँ ट्राइंगल यूज करूंगा. By adding equation 1 and 2, equations 1 and 2, एक स्टेप कम करूंगा. एरिया ऑफ GHF प्लस एरिया ऑफ EHF. दिस वन इज GHF, दिस वन इज EHF. दोनों ट्राइंगल्स के एरिया को अगर मैं ऐड करता हूँ, we will get this one, area of EFGH, or we can say area of parallelogram EFGH equals to 1/2, common ले रहा हूँ, area of DHFC plus area of HABF. This one is DHFC, this one is HABF. अगर इन दोनों एरियाज को मैं ऐड कर देता हूँ, ये एरिया प्लस ये एरिया, दोनों को ऐड करता हूँ, वी गेट एरिया ऑफ ABCD. 1/2 मैं कॉमन रखूंगा. जब इन दोनों को ऐड करूंगा, इट विल बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD. ये रिजल्ट हमें प्रूव करना था. सो दिस वन इज द रिजल्ट. थैंक यू.